So we all know hair transplant is an important decision of your life, and you are worried about your hair. There are a lot of emotions also associated with your hair. Sometimes these emotions can be used and can be manipulated at every level. So we have to understand that what are the tricks. What Sometimes, it's a dirty industry where you fall prey to so many things. There are four aspects. One is medicine, second is PRP, third is your donor for natural hair transplant, and fourth is synthetic hair implant. What are the catches? What are the problems? What are the tricks which might be played, with you? So watching this video is going to help you. Here we have with us Mr. Advait, and we are going to have a discussion where we'll be talking about his journey, how he reached us, and what all he went through, and what are our plans. So keep watching this video. This is maybe a long video, but it will reveal you a lot of stuff. तो देखते रहिए, आखिर तक ज़रूर बने रहिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. दिस इज़ एन इनिशिएटिव फ्रॉम आवर पार्ट, एंड आई रियली थैंक्स Advait for this, being part of this, so that we all know what's going around. So Advait, just now we met in the operation theater, and we had a discussion there. So you came to me for synthetic hair transplant. synthetic hair implant. The number which you were supposed to get done today, what was that number? 2100. It was told to you by By the someone, doctor, yeah. by the doctor. Previous clinic where Yeah. you got this done? Yes. Which clinic, and how many grafts did you get done? You I got a had test patch? yes, I have done 400 test patch. So I did it from MEDICAP, and I did 400 hair follicles of synthetic hair fiber. Okay. How many days back did you get this done? It was done on 26th November. And today is 17. 17 December, so less than a month. Yeah. So you got this done there, the test patch, and you were supposed to do this. So why didn't you go again back to the clinic, the same clinic? Why have you come to us for this big session? Yes, because I was misguided by the clinic, the previous clinic, and they told me like you'll be requiring 2100 grafts. So like I had a span of 17 days in between, in which I saw Sir's video in YouTube, and I got a lot of information about synthetic hair transplant, and so I decided to opt for Sir's clinic, and I was about to have 21 head synthetic hair transplant today, but Sir insisted me that I shouldn't be doing it because I am not requiring that much of density. So that could spoil my hair follicles, hair follicles in between. So this is the reason I opted for Satya Hair Clinic, and they really guided me a lot. So we just met in the operation theater. Yes. And we were about to do this, but when we saw, in fact, not me, before that my team saw Yeah. this, and they told me that this patient has come for 2100 synthetic hair, and we could not find the place there to put 2100. Yeah. So there is obviously no need. Second thing which we checked was the number which you told us, 400 test patch. Yes. It doesn't seem like that. Yes. So there are hardly 100, maybe not even 100 here which are present in that portion. So now I would like to know certain things. When you went to the place, the previous clinic, and did you discuss about the other treatment options like medicine or natural hair transplant, or what were the reasons they gave you to go for synthetic or something like Yeah, I that? did ask them, and they told me like आपके लिए synthetic hair transplant ही better रहेगा because आपका donor लगेगा नहीं इसमें, and they told me it's an instant process. जो आपका बाहर एक foreign body रहेगा, अगर आपको scalp में allergy होता है तब will take it out, and अगर हुआ नहीं तो it's good for you. So they insisted me to put 600 follicles, but I went for 400, and then उन्होंने कहा कि synthetic में आपका एकदम natural look रहेगा, and then you can go style anything, and you can go for swimming, gymming, anything you can do. But
उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये उन्होंने डिस्कस नहीं किया था मेरे साथ। उन्होंने कहा था बस आप एक फ्रीक्वेंट हेयर वॉश करो एंड यू डन। सो यू नो कि इसके अंदर क्लीनिंग की ज़रूरत होता है, यू नो देर आर सम मेडिसिन्स विच आर नीडेड टॉपिकली एज वेल एज ओरली। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे हो सकता है आपने सोचा हो कि आप इसको बहुत लंबा समय तक चला सकते हो, एवरी ईयर यू गेट सम री इम्प्लांट डन, यू नो Yes, दैट देर इज अराउंड फॉल, दे टोल्ड यू दैट yes, देर इज अ फॉल। yeah. सो व्हाट डिड यू थिंक और व्हाट डिड दे टेल यू कि ठीक है हर साल री इम्प्लांट करा के ये कितने साल चल जाएगा? उन्होंने कहा था कि इसका फॉल मैक्सिमम 10 to 20% रहता है, सो एक साल में पाओ जस्ट तो आप उसको री इम्प्लांट कर लो एंड यू आर डन। सो उन्होंने इसका बाद का कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी डिस्कस नहीं किया था मेरे साथ। सो मैं मिसगाइड हो गया था उनके साथ, बट थैंकफुली मैं आपका वीडियो देख लिया इसलिए मैं इधर हूँ आज। So, see, synthetic hair is a big responsibility not only for the patient but for the doctor also. And doctor has to guide the patient in correct way, telling him all the pros and cons, and obviously looking at other alternative treatment options which are available and which may be obviously better than the current scenario of synthetic hair which we were just about to do. Secondly, if you think that it's something which you are putting from outside and आप इसको 10 साल 15 साल चला लोगे, तो लेट मी टेल यू, मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट्स किए हैं, बट द लॉन्गेस्ट फॉलो अप विच आई हैव इज अराउंड 5.5 years. That too, this guy really took care of his hair very well, and he used to come almost every 8-9 months to us for reimplantation and cleaning. But yes, with every passing year the condition of scalp was deteriorating, so he had to take care of this. So if you are looking at a very young age with slight degree of hair thinning which can be improved with medication, which we discussed the other treatment options, you are not a good candidate for synthetic hair implant. It doesn't mean that synthetic hair is not good, but yes, the choice has to be appropriate. किसी भी पेशेंट में उठाकर सिंथेटिक हेयर ऐसे लगा देना इज नॉट गुड. Second problem which we generally feel comes with synthetic is the numbers. So कोई भी नंबर आपको बता दिया जाता है एंड पीपल जनरली फॉल फॉर द कॉस्ट. उनको लगता है कि कॉस्ट कम बताए, कम में हो रहा है, यहाँ पर कम में हो रहा है तो यहाँ करा लें. हो सकता है कुछ लोग आपको ये भी बता दें कि देखो हमने खुद सिंथेटिक करा रखा है एंड सिंस वी हैव गॉट इट डन इट इज़ वेरी सेफ. तो को आप ये मान के चलो कि सिंथेटिक ऐसा कोई बहुत लंबा चलने वाला चीज़ नहीं रहता है एंड इट इज़ नॉट समथिंग जो आप हमेशा के लिए चला सकेंगे. इट हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशंस. आई हैव सीन समवन टेलिंग कि मैंने सिंथेटिक करा रखा है एंड द गाय वियर्स अ पैच विग. तो ऐसा नहीं है. जस्ट फॉर सेल्स पर्पस हम आपको इन चीज़ों में नहीं झोंक सकते, तो थोड़ा सा संभल के चलिए. जस्ट डोंट बिलीव एनीवन ऑन दैट नोट. सेकेंडली, अगर आप कॉस्ट पे जाते हो और आपको कोई भी नंबर बता दे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनको 2100 बताया गया, सो इवन इफ दे पे हाफ द कॉस्ट, मतलब दे आस्क फॉर हाफ द कॉस्ट. अभी हम देखते हैं डोन जैसा इनका पोर्शन है, इसमें अगर 400-500 हेयर भी डल जाएं तो इट विल बी कवर, इट विल बी डन एंड ही वोंट नीड मोर देन 500. तो 500 का 2000 और प्लस एडिशनल जो इनका जो अभी ऑलरेडी 400-500 करके बोला हुआ है दैट. So you just imagine ki what cost you pay, and it is not just the monetary cost which you are paying through the health of your scalp, the life of your hair which they are going to stay on your head. सिंथेटिक हेयर आपके एग्जिस्टिंग बालों को भी थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, स्कारिंग कर सकते हैं. आप वहाँ करंट हेयर को बचाने में आपकी ये कोई मदद नहीं करने वाले एंड यू मे कीप लूजिंग योर एग्जिस्टिंग हेयर इन फ्रॉम दोज एरियाज. तो उस पोर्शन में जब बाल निकलता जाएगा तब आप दवा दवा नहीं कर सकते, उस समय मिनॉक्सिडिल नहीं लगा सकते. सो तो ये चीज़ें हैं विच यू नीड टू नो. एंड दवा से मुझे याद आया, आपने यू हैव टेकन सम ट्रीटमेंट्स इन फॉर्म ऑफ मेडिकेशंस आल्सो अर्लियर. Yes. At what time did you have these medicines and what all medicines you have I had? had minoxidil and finasteride like 2.5 or 3 years ago. Hmm. और मैंने इसको लाइक यूज़ किया था पूरा 1-1.5 साल अच्छे से यूज़ किया था, फिर उसके बाद मैंने उसको स्टॉप कर दिया था. So at that time when you got this, I mean you took this treatment medicine, did you underwent some procedures also, PRP or Yes, I something? did PRPs and GFCs as well. How many sessions you got done? I did approx 10 sessions. 10 sessions every month Yeah, one session per month. per month. So at the same time you were consuming finasteride and Yes. this minoxidil Yes. topical. So at what dose you were taking this I was taking finasteride? 1 mg per day. 1 mg per day.
So, what happened with this? With that medicine when you took it for 1 year? I took it for 1 year. I did see some good results, but when I stopped it, I started losing my hair. So, who asked you to stop the medicine? Who told you to stop the medicine? Actually, the doctor told me like for a year you can use it, then later on you can stop it, so your hair stays and everything is normal. Okay. So, at that time, did the doctor tell you that medicine has some serious side effects, also potential for that? Yeah, they did tell me like they just told me like sexually आपको कुछ problems हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको रोक दोगे फिर आप back to normal हो सकते हो. तो उन्होंने आपको ये बोला था कि ये तो फिर बताया ही नहीं कि दवा छोड़ने के बाद यू विल हैव सीवियर रिबाउंड, ये तो नहीं No, बताया. नहीं. एंड डिड दे डिस्कस अबाउट टॉलरेंस ऑल्सो कि अगर आप दवा लेते भी रहते हो, इवन इन दैट सिचुएशन आपको आगे चल के हो सकता है कि दवा का डोज बढ़ाते रहना नहीं, पड़े एंड इट मे स्टॉप वर्किंग. ऐसा कुछ भी किसी ने कहा. सो व्हाट हैपेंड व्हेन यू स्टॉप द मेडिसिन? I saw serious hair fall problems and then hair loss भी हुआ. I started थोड़ा यहाँ इस थिनिंग हो जगह से गया. थिनिंग भी स्टार्ट हुआ. उस वक्त इतना विजिबल नहीं हाँ, था विजिबल जितना. नहीं था, लेकिन लेटर ऑन लाइक आफ्टर 4 months 5 months के बाद विजिबल होने लग गया था. एग्जैक्टली. सो सी, आपको तो शुरू में तो ये लग रहा होगा कि ये इतने सारे जो पीआरपी और जीएफसी सेशंस आपने कराए हैं इससे बहुत फर्क आ गया. हाँ. So see, another important point here which you must know, आपको बहुत सारे नंबर्स ऑफ पीआरपी, जीएफसी और पता नहीं अलग अलग नामों से इसको बेचते हैं लोग, बेचे जाएंगे. साइमल्टेनियसली इफ़ यू आर पुट ऑन फिनेस्ट्राइड, आपको फ़र्क फिनेस्ट्राइड से आएगा और आप समझते ही रहोगे कि आपको दवा काम कर रही है. और आप फालतू में इतने इंजेक्शंस तो लगते थे सर पे, यस. पेन तो होता होगा, हाँ. ट्रैवल भी करना पड़ता होगा, जी. दिन भी पूरा निकलता होगा जी. उसमें. सो आपका टाइम भी खराब हो रहा है, आप खून भी डोनेट कर रहे हो. इससे अच्छा तो ब्लड बैंक में जाके डोनेट कर लो, किसी की दुआ तो मिलेगी. सो इट इज़ ऑफ नो यूज़. आई मीन मल्टीपल सेशंस आर नॉट नीडेड. तो हमने देखा, अभी तक हमने देखा कि 3 चीज़ें: दवा, कैसे मेडिसिन मैनिपुलेट करती है रिजल्ट्स को. सेकंड इज हाउ दीज पीआरपी सेशंस आर बीइंग सोल्ड, जो मल्टीपल बता बता के बेचे जाते हैं. एंड थर्ड, सिंथेटिक हेयर, जिसमें कि वी सॉ द नंबर्स. एंड द सेम नंबर गेम इज एप्लीकेबल इन नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट ऑल्सो. अभी दवा दे के साथ में मेडिसिन दे दी के साथ में पीआरपी करके पीआरपी को बेच दिया गया. एंड द सेम वे ट्रांसप्लांट्स आर ऑल्सो बीइंग सोल्ड. अभी जैसे इनको लाइक 2100 हेयर बताए गए थे और ऑलरेडी 400 डल चुके हैं, तो दैट मीन्स 2500. 2500 फॉर दैट such a small area. I'm talking about natural hair transplant now. If you see these cases, you will find कि ऐसे बहुत सारे केसेस में सब पेशेंट्स में साथ में 1 mg पर डे फिनेस्ट्राइड दिया जाता है और एरिया कवर हो जाता है. एंड दे विल टेल यू क्रेजी नंबर्स. वी हैव shown so many times, even grade 6, grade 7 are being flashed. We covered grade 7, we did wonderful work, and entire area is covered. No, it is medicine which is working behind the curtains. Sometimes even 80-90% result is coming through medicine, and the patients are being fooled, and this creates a lot of gap between expectations and reality. And you don't get to know. Now you are young, you are just 23 I'm years just of age. 23. So just 23 years of age, long way to go. We know that there are limited resources, medicine, PRP, and your donor. So obviously it means we have to take care of resources. बहुत संभल संभल के उसको खर्च करेंगे so that journey को prolong कर सके. Your life is not an Instagram picture. आप ये नहीं जानते हो उन पेशेंट्स का जिन्होंने अभी पूरा बोझा अपने सर पे दवा का उठा रखा है. सारा डोनर उनका ख़त्म हो चुका है. अभी आपको एक बार के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, वही रिजल्ट आपको बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, बट आप देखें एक्चुअली में वो वैसा नहीं है. सो नाउ व्हाट टू डू? सो इन द मॉर्निंग व्हेन वी डिस्कस्ड, there is an option that we take these hair out because I don't think you are a good candidate for this, or let these hair remain there, they will fall out after some time. Yes. We can do a session of PRP, but in most of the cases where patients have taken finasteride earlier, they generally don't respond to other medications or lesser medications. So in such cases, we have to usually start finasteride, but you don't need it at that dose. So microdosing, the concept of microdosing is really good, and we have seen that even 2 mg finasteride per week, that is like half tablet 4 times a week or Yes. 3 times a week, can help. And obviously the effect is directly proportional to the dosage. So if I give you 1 mg per day,
that is 7 mg per week, you will have excellent results. If I give you 1/5 the dose, you will have 1/5 the effect. But even with that, the kind of thinning you have, I think it shall improve. We may not need a transplant at all. If there is no thinning, uh, progressive thinning, and say if your age is 35, 40, then in that situation we can opt for a transplant straight away rather than bringing finasteride into picture. But yes, if you are young and the thinning is there, we shall start the medicine. I think you take this for around 2 to 3 months. We meet again, and in all probability, we won't be needing a transplant. Okay. In case we do, we can do a small short transplant, maybe 2, 300, 400 grafts, and that can be done completely hidden, Okay. without shaving off your head, not the donor, not the recipient area. Okay. Nothing needs to be shaved off, and this can be done. I think one of the reasons you opted for synthetic was you didn't want to wait for. Yes. They Exactly. told you that Yeah. you'll have to wait. Instant and all. results मिलेंगे आपको. Instant results. Don't fall for this instant gratification. A lot of people go for instant gratification in form of 1 mg finasteride per day. Along with that, almost all the donor being uh, extracted from the bag and nothing left there. They go for low hairlines. They go for huge density, which is not the correct way. Hair restoration is a journey. You have to plan it. If you don't plan it, you are never going to get it right. Apparently, if you get something right for once, it doesn't mean that it is actually right. All that glitters is not gold. Okay, and it is really, really important for you young guys to understand this. And when you hate your hair loss, when you hate yourself, when at any cost you want your hair back, maybe you will opt for things which may not be that good for you. With or without hair, you are good, you are great. Maybe yes, we are using technology here, making it look little better, but make sure that it is we who are using technology, not us getting used by the technology. So if you have little bit of patience, do your research, see the things, don't fall for instant gratification, you will get the right treatment options for you. And we'll keep updating you. Thank you, Advait. Thank you for Thank you so much. sharing this. Any last message you would like to? आई वुड से लाइक जब भी आप कुछ हेयर ट्रांसप्लांट का सर्च करते हो तो अच्छे से सर्च करना और फॉर द गुड क्लिनिक एंड क्योंकि दैट्स अ लाइफ एंड यू शुडंट बी प्लेइंग विद इट सो और फॉर गुड क्लिनिक थैंक यू. Yeah, and let me explain a little about this good clinic also. हो सकता है कि आपको लगे कि ये क्लिनिक तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, क्योंकि दिखाया तो कुछ भी जा सकता है, इवेंचुअली अंदर किया क्या जा रहा है. आई थिंक आप भी जहाँ गए वो कोई ऐसा कोई खराब क्लिनिक तो नहीं था. नहीं. दैट इज ऑल्सो मार्केटेड अ लॉट ऑन Yes. यूट्यूब एंड एवरीवेयर. यस. सो इसका मतलब अच्छा सिर्फ दिखने में अच्छे से नहीं होता है. अच्छा मतलब अच्छे से रिसर्च करना होता है. देखो रिजल्ट्स, देखो दवा के रोल को, देखो कितने ट्रांसपेरेंट है, कितना क्या पीआरपी बता रहे हैं, क्या आपका क्लिनिक सिर्फ एफयूई सर्जरी कोई डिफरेंट नामों से बेच के अपना काम चला रहा है, या वास्तविकता में आपका साथ निभा भी पाएंगे, क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं उधर जो जो भी डॉक्टर और जो भी क्लिनिक है उनके ऊपर, बिकॉज इट इज़ अ जर्नी एंड यू रियली नीड समवन हु कैन मेंटोर दिस जर्नी, ताकि आप यू डोंट रन शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज वेरी सून. और ये सारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, दवा चाहे पीआरपी चाहे डोनर, और फॉर दैट मैटर सिंथेटिक ऑल्सो. सो ये वीडियो का मेन मकसद यही था कि आप अपने लिए जर्नी प्लान कर सकें. एक नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट ईजी 7-step guide, the e-brochure to plan your journey. So you can download it for free. And don't forget to subscribe the channel. And if you have questions, if you have experiences, do share in the comment section. We would love to answer them. And thank you so much. Love yourself. With or without hair, you are beautiful. Thank you. Love yourself. Stay blessed.